so today we are going to begin with the lesson number 11 of your class 6 English, that is poem My Bird Sings. So let's begin with this poem. Your pretty bird in gilded cage fluttered its sorrowful wings, but there never a cage bird yet could sing as my bird sing. So क्या है, your pretty bird is in gilded cage, किसमें है तुम्हारी pretty bird, किसमें है golden cage में है, flutter its sorrowful wings, अपने wings को flutter करती है, but there never a cage bird yet could sing, but आज तक कोई cage bird गाना नहीं गा पाती थी जैसे कि मेरी bird गाती है. As he is little and brown and wild and shy, but free to build and thrive. Your poor bit thinks behind its bars, it's only half alive. So क्या है, he is little and brown, वो कैसी है, वो कैसा है, लिटिल है, छोटा है, ब्राउन कलर का है, वाइल्ड है और थोड़ा सा शाई है, बट फ्री टू बिल्ड एंड थ्राइव, वो फ्री है बिल्ड करने के लिए और थ्राइव करने के लिए भी. और पुअर बिट थिंग्स बिहाइंड इट्स बार, थोड़ी सी बिट थिंग्स बिहाइंड इट्स बार, उसके बाद के पीछे, इट्स ओनली हाफ अलाइव, वो खाली हाफ अलाइव है. माय बर्ड सिंग्स आउट विद अ ट्रू वुड नोट, योर पाइप्स ऑफ sorrowful things, and never now maybe he learned the songs that my bird sings. So my bird sings out with a true wood note. वो कैसे गाती है, true wood note से गाती है, your pipes of sorrowful things. So and never now may he learn the song. पता नहीं song कब learn करा, that my bird sing, और कोई कर नहीं सकता जैसे भी bird करती है, गाती है. Never now maybe he wheel and soar with the sunshine on his wings. Oh, a bird in cage is crippled things, by my bird sings, but my bird sings. So never now may he wheel and soar, वो कभी कभी wheel और soar, but the sunshine on his wings, क्या है, sunshine है उसके wings पे. Oh, a bird in a cage, एक bird है cage में, is a crippled thing, वो क्या है, crippled thing है, but my bird sings, but मेरी bird गाती है. For mine is every bird that fly or on free wild wings, and there never a cage bird yet would sing as my bird sings. For mine is every bird that flies, हर bird जो fly करती है on free wild wings, अपने free wild wings पे, and there is never a cage bird yet could, अभी तक कोई cage bird अब तक इतना ऐसा गाना नहीं गाती जैसे मेरी bird गाती है. So that's all for this poem. This poem is given by Horace Stowell. So that's all for this poem. I hope you like the explanation of this poem. Thank you and have a great day.